हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड लेसन 6th ज्योग्राफी का नेचुरल रीजन से इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं। यह स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, करेक्ट द रॉन्ग वन एंड राइट दैम डाउन। अभी फर्स्ट है मेरे को इसमें, ड्यू टू इट्स माइल्ड एंड वार्म क्लाइमेट पीपल फ्रॉम द वेस्ट यूरोपियन रीजन्स आर नॉट एनर्जेटिक। आंसर ये रॉन्ग है। ड्यू टू इट्स माइल्ड एंड वार्म क्लाइमेट पीपल फ्रॉम द वेस्ट यूरोपियन रीजन आर एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियस एंड enthusiastic. Second है, the Prairie region is called the wheat basket of the world. आंसर ये राइट है। थर्ड है, the trees in the Mediterranean region have oily leaves and the bark is quite thick. There is a high rate of transpiration. Answer wrong. The trees in the Mediterranean region have oily leaves and bark is quite thick. Therefore, there is a low rate of transpiration. Next question है, fourth, the camel is an important animal of the hot desert region as it can survive without water and is useful for transport. Right. Fifth, carnivorous animals like tigers and lions are found in large numbers in the equatorial regions. Answer wrong. Carnivorous animals like tigers and lions are found in large numbers in the grassland regions. Question second, give geographical regions. First, people in monsoon region are mainly engaged in agriculture. Answer, the soil, rainfall, temperature and other climatic conditions are suitable for the growth of variety of crops in monsoon region. This region receives rainfall in specific seasons from southwest monsoon winds. Annual rainfall is between 27 degrees Celsius and 32 degrees Celsius. Its winter temperature is between 15 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. Second question है, trees in equatorial forest grows tall. Answer, rainfall is heavy and hot and humid climate support the trees to grow tall in equatorial forest. Here, the summer temperature is 30 degrees Celsius. The annual rainfall is around 2,500 mm to millimeter to 3,000 millimeter. It rains throughout the year in this region. Sun rays are also perpendicular. The trees in equatorial forest grows tall. Third, vegetation is short-lived in tundra region. Answer, in this region temperature is near about -20 degrees Celsius to -30 degrees Celsius. This temperature do not support the growth of vegetation. The mean summer temperature of tundra region is 10 degrees Celsius. Due to availability of sunlight, short grass, small shrubs, flowers, lichens, moss, etc. grow in tundra region. But due to long winter, during long winters, the natural vegetation in tundra region disappears at rapid speed. Thus, vegetation is short-lived in the tundra region. Next, answer the following question. What is latitudinal extent of the monsoon region? Write the names of areas that are included in monsoon region. Answer A. Latitudinal extent. The monsoon region extends between 10 degree and 30 degree north and south, parallels in both the hemisphere. B. Areas. Indian subcontinent, Philippines, West Indies, North Australia, East Africa, Central America are some of the areas that are included in monsoon region. Question second है, name any 3 herbivorous animals from the Sudan region and what has nature endowed them with for self-protection. Answer, herbivorous animals from Sudan region are giraffe, zebra, kangaroo. Nature has endowed herbivorous animals with speedy legs,
Carnivorous animals attack on herbivorous animals for hunting. At such times, speedy legs of herbivorous animals enable them to run away and protect themselves from carnivorous animals. Third, what are the characteristics of the monsoon region? Answer, characteristics related to climate. इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे द समर टेम्परेचर इज़ बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस. विंटर टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल इज़ 250 मिलीमीटर टू 2500 मिलीमीटर. बी है कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू नेचुरल वेजिटेशन. तो वेजिटेशन के हिसाब से भी हम उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. तो सेमी एवरग्रीन एंड डिसीडुअस फॉरेस्ट आर सीन इन मॉनसून रीजन. और कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ हम देखेंगे. उसमें है एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हैमलेट्स इज सीन इन दिस रीजन. कंसिडरेबल डिफरेंस इन डाइट एंड कॉस्ट्यूम ऑफ पीपल इज फाउंड इन दिस रीजन. सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. बीच में अगर कोई वर्ड रहा भी है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसे, तो आप इसे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए.